Hello बच्चों, welcome to Maths by TV. So here we need to find integration of e raised to I ln x plus e raised to minus I ln x upon x dx. I have to add one thing here, root minus 1 equal to I. So basically I is a complex number, right? And for complex number we know one thing, cos theta equal to e raised to I theta plus e raised to minus I theta upon 2. So from this we can say that 2 cos theta equal to e raised to I theta plus e raised to minus I theta. So चलो हम इससे यूज़ करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों? तो चलो, सो ई रेज टू आई एल एन एक्स प्लस ई रेज टू माइनस आई एल एन एक्स को हम अगर इसके साथ कंपेयर करें तो थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पर एल एन एक्स है, राइट? सो रिप्लेस थीटा बाय एल एन एक्स इन दिस. सो व्हाट वी गेट हियर, integration 2 times of cos of ln x, right? 2 times of cos of ln x upon x. so ऑलरेडी हमारे पास था ही, राइट? चलिए, तो ये तो हो गया. अभी क्या करेंगे, we know that ln x 1 upon x is nothing but differentiation of ln x. So we are going to take ln x equal to u, differentiating both sides, 1 upon x dx equal to du, right? So replace dx by x by du and ln x by u. What we get here, 2 cos u into du, cos u into du. 2 as it is integration of cos u, integration of cos is nothing but sin u plus c. So 2 times of sin ln x plus c. So this is our final आंसर. बच्चों एक ही पार्ट पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड था, एंड वो पार्ट क्या है, जो था वो cos थीटा इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा बाई 2 हमें पता होना चाहिए, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच.